Hello, Mathurima, and watching Northeast Express on HornbillTV. The ongoing conflict in West Asia is beginning to affect India's orthodox tea exporters, facing declining demand, rising insurance costs and uncertainty over payments, according to Dinesh Bihani, Secretary of the Guwahati Tea Auction Centre GTPL. Speaking on the impact of the geopolitical crisis on the tea industry, Bihani said the effects have become noticeable over the past 1.5 months, particularly in the orthodox tea segment that relies heavily on exports to West Asian markets. He noted that the conflict has raised concerns among tea exporters despite India's tea export sector witnessing strong growth in recent years. The concerns come even as India's tea exports have shown remarkable growth. Earlier in May, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the country's tea export sector had recorded a 93% increase in value, reaching Rs 8,719 crore in 2025-26 from Rs 4,509 crore in 2013 to 2014. India's tea industry continues to benefit from globally recognized varieties such as Assam, Darjeeling and Nilgiri teas, with exporters increasingly exploring new markets to offset challenges arising from geopolitical uncertainties. हाँ, ऑर्थोडॉक्स क्वालिटी के अंदर में अभी पिछले 1-1.5 महीने से हम लोगों का वेस्ट एशिया क्राइसिस का इफेक्ट आना चालू हो गया है। ऑर्थोडॉक्स की डिमांड कुछ धीरे धीरे घट रही है। उसका मेन रीजन है कि वेस्ट एशिया में जो हमारी चाय जाती थी उसको चाय भी पहुंचने में 45 से 50 दिन का टाइम लगता है। इंश्योरेंस का दाम बहुत बढ़ गया है और ऑर्डर भी कम मात्रा में आते हैं। पेमेंट की भी पूरी सिक्योरिटी नहीं रहती है। उसके चलते हम लोगों का एक्सपोर्ट जो क्वालिटी जो लास्ट ईयर में एक रिकॉर्ड तोड़ हुआ था, करीब हमने 280+ मिलियन किलो जो लास्ट ईयर एक नया कीर्तिमान बनाया था एक्सपोर्ट के अंदर में। इस साल शुरू में हम लोगों को पता नहीं चला इतना, लेकिन ये जब युद्ध इतना काफी फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून ये बढ़ता ही जा रहा है, इसका इफेक्ट धीरे धीरे हमारे ऑर्थोडॉक्स के जो सेलर्स हैं उन लोगों में चिंता की बात बनी हुई है कि आगे आने वाले महीनों के अंदर में यदि युद्ध की पोजीशन ठीक नहीं हुई तो हमारे आने वाले महीनों के अंदर में हमको ऑर्थोडॉक्स से वापस सीटीसी में डाइवर्ट करना पड़ेगा या हमारी चाय का रेट हमको कम मिलेगा। हालांकि एक्सपोर्ट के लिए हमारे नए नए मार्केट हम लोगों ने खोजे हैं। रशिया भी हम लोग का एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इराक जो वर्ल्ड की टॉप क्वालिटी जो ऑर्थोडॉक्स बनती थी उसका एक हमारा बहुत बड़ा कंज्यूमर था, हमारा ग्राहक था। देखते हैं आगे भविष्य में कैसा युद्ध की स्थिति रहती है, उसी के उपरांत हम लोग आगे कुछ बोल सकते हैं। हाँ, वैसे देखा जाए तो देखिए शुरू में तो हम लोग को मार्च तक तो कोई ज्यादा एक्सपोर्ट का इफेक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि ऑफ सीजन भी था और पहले का लोगों का कमिटमेंट किया हुआ था। लेकिन अभी पिछले 2 महीनों के अंदर में करीब 5 से 10 मिलियन किलो अभी 2 महीनों में हमारा बाजार का जो अनुमान है 5 से 10 मिलियन किलो चाय का एक्सपोर्ट कम हुआ है ऑर्थोडॉक्स चाय का। तो इससे यहाँ के जो टी ग्रोवर से Union Home Minister Amit Shah is scheduled to visit Tripura this week to review border security infrastructure and assess the progress of fencing along the India-Bangladesh border ahead of the proposed implementation of smart border management systems. Chief Minister Dr. Manik Shah said on Tuesday that, speaking to reporters in Agartala, Dr. Shah said border fencing and security would be primarily focus of Shah's visit. He also said the centre is considering the introduction of smart border management solutions in Tripura as part of a broader strategy to strengthen security along the international borders of eastern and northeastern states. Similar initiatives are also expected to be implemented in Assam and West Bengal. The proposed systems aim to enhance surveillance, improve border monitoring and address security challenges in sensitive frontier areas. According to the Chief Minister, Amit Shah will arrive in Agartala on June 4. Besides reviewing border security arrangements, he is expected to participate in a program related to the redevelopment of Pushpa Banda Palace into a luxury heritage hotel while preserving its historic character. ये देखिए अभी हमारा जो 23rd प्लेनरी सेशन होने जा रहा है मेघालय में, शिलोंग में, तो वहाँ पर मुझे भी 2 चीज़ के लिए मुझे आप जानते हो 2 विषय में जो हमारा टास्क फोर्स बनाया था, हाई लेवल टास्क फोर्स, उस विषय में मुझे 2 वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है
उसके बाद नेसाक के विषय में भी वहाँ पर बात होगा और टी-सेक के बारे में भी बात होगा और उसके बाद एज ए होल त्रिपुरा के लिए भी मुझे वहाँ पर कुछ कहना है और उसके बाद मेरे ख्याल से 5 तारीख को हमारे होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आ रहे हैं और बॉर्डर एरिया जो है वो देखेंगे वहाँ पर 2-3 जगह जाएंगे तो जाने के बाद और साइड बाय साइड मैंने उनको लेटर लिखा था यहाँ पर पुष्पवंत पैलेस का जो यहाँ पर फाउंडेशन ले होगा इनके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था उन्होंने राजी हुआ है तो ये आएंगे तो उसके बाद और क्या क्या मतलब प्रोग्राम है वो बाद में और भी पता लगेगा क्या क्या करें। हाँ नहीं वो तो उनको मालूम है सब मैंने पहले भी बताया उनको आजकल असम और त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल तीनों जगह को काफ़ी उन्होंने कहा जैसे भी हो उसको बंद करना चाहिए अनुप्रवेश और स्मार्ट फेंसिंग बंदोबस्त करेंगे उसमें। The indigenous tribal leaders from ITLF on Wednesday organized a sit-in protest at the Wall of Remembrance in Churachampur, demanding the release of 14 Kuki individuals allegedly being held captive by the Naga groups and the arrest of those responsible for the killing of 3 pastors in an ambush on May 13, 2026. The protest began at 11 a.m. saw the participation of a large number of women who questioned the United Naga Council's reported decision to withdraw an earlier move to release the captives. They appealed to the central government to intervene and ensure the safe release of the 14 individuals on humanitarian grounds. Speaking during the protest, ITLF Women's Wing Secretary Julie Maui said the continued detention of the 14 individuals and the killing of the 3 pastors had caused deep concern among the Kuki community. She urged the authorities to take immediate steps to secure the release and bring those responsible for the killing to justice. According to the ITLF, the sit-in protest will continue until the 14 individuals are released and those responsible for the killing of the 3 pastors are arrested. We are here at Wall of Remembrance, Tribal Churatanpur, holding sit-in protest, demanding release of 14 Kukizo who were abducted. We also demand arrest of those responsible in killing 3 Kukizo pastors. Few days ago, United Naga Council already made preparation to release the 14 Kukizo hostages, but with reasons unknown, they cancelled the plan and continue the League-Zo hostages. So we want to ask why the UNC changed its decision. We also question why the state and central government have failed to intervene to reserve the Kukizo hostages. While the state government of Assam is carrying out an intense eviction drive to free government lands from the clutches of suspected citizens, a worrying piece of information has come to light. Even after the government's strict stance, land occupation by suspected citizens continues unabated in some areas. After government lands, the target of the occupiers has now fallen on tea garden lands. A serious allegation has been raised that a large tract of land in the Silkuri tea garden of Kachar district in Assam has been occupied by suspected citizens. According to the workers of the garden and local residents, more than 200 bighas of land in the Dharmkal area of Silkuri garden has been illegally occupied by a section of suspected citizens. According to the allegations of the local people, these suspected individuals have entered the garden's land without any kind of valid documents. Not only have they occupied the land, but they have also very rapidly constructed hundreds of permanent and temporary houses and started living there. They have even begun fish farming by evacuating the garden land and creating large illegal fisheries. It has been alleged that with the help of a section of local land mafias, these suspected people have been carrying out this occupation for the past several years. The worrying factor is that every single one of these illegal constructed houses has a legal electricity connection from the power department. এখানে শিলকুড়ি টি গার্ডেন এই জায়গাটার নাম শিলকুড়ি টি গার্ডেন এইখানে আজকে ৩-৪ বছর থেকে মানে অনেক অনেক মানুষ নতুন নতুন আইয়া বসবাস করে হ্যাঁ প্রচুর জায়গা এখানে মানে দখল করছে জিগাইলে তো কই না আমরা কিনছি বাগানের কাছ থেকে আমরা কিনে লাইছি বাগানে আমরা এনওসি দিলাইছে তো তোমরা এখানে কোনো জোর চলতো না
এরপরে আমরা আর কিতা করতাম বাগানেও জানাইছি বাগানেও আইয়া আমরা কিতা বুঝ দেয় না দেয় এরপরে তারা ডেলি ঘর বনের ওখানেও ডেলি 2-4 জন ডেলি আইতেছে পরিবার ডেলি আইয়া বসবাস করে জায়গা এখানে 300-400 বিঘার মতো জায়গা এরা দখল করছে ফ্যামিলি ওখানেও বাড়ি গনতে গেলে তো 200-250 ফ্যামিলি আই গেছে বর্তমানে কিন্তু এখনও আওয়ার পথেই আছে এরা আজকে 4-5 বছর থেকে কন্টিনিউ চলে সব বাগানের জমি ওইখানে সামনে বিল একটা আছে বাগানের ওই বিলের আশেপাশে মানে যত মানে অবৈধ মানুষ মানে এটা চিনাও যায় না এরা আইয়া বসবাস করছে আর এটা তো মনে করি বাংলাদেশি মানুষ আছে বাংলাদেশ থেকে আইয়া এখানে ভূমাফিয়া তারা আশ্রয় দেয় তোমার একটা ভীষণ দাস বলে একটা লোক আছে এই জমিনে এইও করে মানে দালাল টাইপের মানুষ এরাই তারা আনিয়া 2 কাঠা 4 কাঠা বিক্রি করিয়া তারা বসবাস করার প্রদীপ দাস বলে একজন ছিল হেও কিছু জায়গা লইছিল এরপরে হে লয় না কিন্তু এখন বর্তমানে যে নতুন জায়গাগুলো যেগুলো বিক্রি হওয়ার বা লোয়া লই চলে এটা মানে ওর জেন হলো ভীষণ দাস এইগুলার বেশি কারবার করে মানুষটা হেউ আনে সব আছে রাস্তাঘাট তারা দোকানদারি সব করে ওখানে সব কারেন্ট সব তারা আনি লেছে সব সুবিধা লইছে আর এও তো যদি আমরা মানুষের 2-1 জনের জায়গা জমিন আছে ওইটার মধ্যেও তারা ভেজাল করে ভোট তো দিছে কিছু দিছে আর কিছু নাও দিতে পারে জানে সব জানে কিন্তু কেউ মাতে না এগুলোর মধ্যে তারা লিঙ্ক আছে বাগানের লগে তারার ভূমাফিয়ার লিঙ্ক আছে তখন আমরা আসাম সরকারের কাছে চাই যে আমরা তো কোনো উপায় না আমরা তো বাগান লইয়াই চলি বাগানের কাজকর্ম করি আমরা মানুষ মা বোন সবে চলে আগে থেকে চলিয়ে আইছে কিন্তু এখন যদি বাগানটা এরকমভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় বাইরের মানুষ আইয়া হামাই যায় তা আমরা যে লোকাল যে বাগানি মানুষ এরার অবস্থাটা কী হইব ওইটা সরকারের কাছে যেটা তদন্ত করিয়া আমরা একটা সুবিচার করিয়া দেখ ডেলি আয় কখনো আওয়াত আছে ডেলি আয় ঘর বানায় থাকে জিগাইলে কেউ না আমরা জায়গা কিনছি Meghalaya is accelerating its transition towards clean energy with the expansion of solar infrastructure across educational institutions, with Chief Minister Konrad K. Sangma on Tuesday announcing that nearly 2,000 schools in the state are being brought under the Chief Minister's solar mission. The announcement came during the inauguration of the 50 kW solar photovoltaic PV plant at St. Mary's Higher Secondary School, Shillong, one of the largest solar installations in an educational institution in Meghalaya. Implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA), the 50 lakh project includes battery backup facilities and is expected to substantially reduce the institution's dependence on conventional power sources. The Chief Minister said more than 1.5 MW of solar capacity has already been installed in nearly 700 schools, while implementation in another 1,300 schools will commence shortly. He added that the state is also planning to introduce net metering facilities, enabling educational institutions to feed surplus power back into the grid and benefit households and communities.
at St. Mary's Higher Secondary School. With all our students here. We are here to inaugurate the 50 kilowatt solar panel. You guys say hi. Today is indeed a day of immense joy and gratitude and pride for our institution as we gather to inaugurate the 50 kilowatt solar power project installed in our school through the generous support of the government of Meghalaya. Now we celebrate a shared vision for sustainable development and responsible energy use. At the outset, I consider it a singular honor and privilege to extend our most heartfelt welcome to our Chief Guest, Shri Kondad K. Sakma, the Honorable Chief Minister of Meghalaya. Sir, we are deeply grateful that amid your many responsibilities you have chosen to join us today to dedicate this important project to our school community. Your presence adds immense significance to this occasion and will remain an enduring inspiration to our staff and students. It's an honor and privilege that we got the opportunity as a power department to install this 50 kilowatt solar power plant. Now you must have read a lot about renewable energy, so you are seeing firsthand the kind of implementation that we will be doing or we have done. You have heard in the news repeatedly about the West Asia crisis, about the Strait of Hormuz and the cascading effects that is happening on the economy on several nations across the world. And you would realize time and again the emphasis that has been given by the central government and also the state government on renewable energy. As a part of that initiative and emphasis, our Honorable Chief Minister also envisioned that renewable energy is the answer for the future. And for that reason, we are today seeing the light of the day that a 50 kilowatt, one of the largest solar power plants have been installed in St. Mary's. So then it is adjusted with your bill then? Yes. Okay, so then your bill will again go down further by a rupee or 2 rupees for every unit you give to us. Because since we're giving it from our side. Yes. Full, 100%. Yes. So since it is fully so measuring is to be done. Yes. This is monocrystalline, sir. Okay. It's higher. So in this sunlight also it will be able to generate electricity. Yes, sir. And on the top of that building. Okay. This is the nerve center. Right. So this is the project for the CM solar mission. And this is here right here in Shillong in St. Mary's High. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.